Hello बच्चों, let's read the question. The question says that solve the equation cos theta minus sin 3 theta equal to cos 2 theta, which means theta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिजल्ट क्या यूज करेंगे? इट इज sin 2 theta equals to 2 into sin theta into cos theta. एंड नेक्स्ट रिजल्ट यूज करेंगे. इट इज cos c माइनस cos d. इट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस c अपॉन 2. एंड व्हेन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है हमारे पास, देन जनरल सोल्यूशन ऑफ थीटा इट इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़्ड टू पावर n इंटू अल्फा, where n belongs to any integer. Fourth result, it is when cos theta equals to cos alpha, then general solution of theta, here it is cos theta equals to cos alpha. So from here theta equals to 2n pi plus minus alpha, where n belongs to any integer. So now इसके concept को use करके question को solve करते हैं. First of all statement में equation क्या given है हमारे पास? cos theta minus sin 3 theta equals to cos 2 theta. So now from here it is cos theta minus cos 2 theta equals to sin 3 theta. So now we know that cos c minus cos d, इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे cos theta minus cos 2 theta पे. So it becomes 2 into sin theta plus 2 theta upon 2 into sin 2 theta minus theta upon 2 equals to sin 2 theta का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो फ्रॉम हेयर इट इज 2 into sin 3 theta upon 2 into cos 3 theta upon 2. So now from here 2 से 2 cancel out हो जाएगा. So it can be written as sin 3 theta upon 2 into sin theta upon 2 minus sin 3 theta upon 2 into cos 3 theta upon 2. It is equal to 0. So now from here take sin 3 theta upon 2 common. Remaining terms are sin theta upon 2 minus cos 3 theta upon 2. It is equal to 0. So from here we can say that sin 3 theta upon 2 equals to 0 or sin theta upon 2 minus cos 3 theta upon 2 equals to 0. So from here sin theta upon 2 किसके equals to आ जाएगा? cos 3 theta upon 2. So now from here sin 3 theta upon 2 equals to 0 आया था हमारे पास. Now it is sin 3 theta upon 2. Now 0 value कहाँ पे होती है sin पे? at sin 0. So now it can be written as sin 0 degree. So from here it is sin theta equals to sin alpha form. Now so from here theta equals to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha आएगा. So from here 3 theta upon 2 equals to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha. Here alpha is 0. So from here it is equal to 3 theta upon 2 equals to n pi. Theta equals to 2 n pi upon 3, where n belongs to any integer. And now sin theta equals to cos alpha है हमारे पास. Now from here it can be written as cos pi upon 2 minus theta upon 2. Because of cos pi upon 2 minus theta, cos pi upon 2 minus theta, it is equal to sin theta. So now इस रिजल्ट का यूज किया हमने यहाँ पे. it is equal to cos 3 theta upon 2. So now it is in the form cos theta equals to cos alpha. So from here 3 theta upon 2 it can be written as it is equal to 2 n pi plus minus alpha. Here alpha is pi upon 2 minus theta upon 2. So from here 3 theta upon 2 equals to 2 n pi plus pi upon 2 minus theta upon 2. So now from here it is 3 theta upon 2 equals to 2 n pi plus pi upon 2 minus theta upon 2, which is equal to 3 theta upon 2 plus theta upon 2 equals to 2 n pi plus pi upon 2. So from here it is
4 theta upon 2 equals to 2 n pi plus pi upon 2. So from here theta equals to n pi plus pi upon 4, where n belongs to any integer. एंड अगर यहाँ पे माइनस का साइन ले, सो फ्रॉम हियर इट इज 3 थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 n पाई माइनस पाई अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा. सो फ्रॉम हियर इट इज 3 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 n पाई माइनस पाई अपॉन 2. So from here it is 2 theta upon 2 which is equal to theta. It is equal to 2 n pi minus pi upon 2, where n belongs to any integer. So हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गया आगे. एक तो वैल्यू आई है हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 2 n pi upon 3 where n belongs to any integer, and second value it is theta equals to n pi plus pi upon 4 where n belongs to any integer, and third value it is equal to 2 n pi minus pi upon 2 where n belongs to any integer. I hope you all understand it well. Best of luck.